Good morning, students. This is third video of the chapter Solar Radiation, Heat Balance and Temperature. Since the video is long, I've divided it into three parts. Now let us begin with the next topic, that is temperature. Now what is temperature? Temperature is the interaction of insolation with the atmosphere and the Earth's surface that creates heat, which is measured in terms of temperature. So the heat created by the insolation present in the atmosphere and on the Earth's surface, that is called as temperature. Now, while heat represents the molecular movement of particles comprising a substance, the temperature is the measurement in degrees of how hot or cold a thing or a place is. तो जो गर्मी है एक चीज़ की, एक जगह की, एक प्लेस की, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं और उसको डिग्रीज में मेजर किया जाता है. Now what are the factors that control temperature? First is latitude. Okay, so the temperature of a place depends on the insolation received. एक जगह पे जितनी इंसोलेशन है उसको उस पर डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा. जो प्लेसेस डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे वर्टिकल पड़ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा एज कंपेयर टू प्लेसेस वेयर द सनलाइट इज स्लांटिंग. सो अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स, अब जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक्स में जो है वहाँ का टेम्परेचर हायर होगा as compared to the polar regions. Next is altitude. Altitude is height. The atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation from below. Okay, so therefore places near the sea level, they have higher temperature than places situated at higher elevations. जो higher elevations पे वहाँ पे गर्मी कम होती है as compared to lower areas. In other words, the temperature generally decreases with height. अब क्या रेट है इसकी डिक्रीज होने की? The rate of decrease in temperature with height is termed as the normal lapse rate. ये जो डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ टेम्परेचर, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. नॉर्मल माना जाता है क्योंकि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट. And the rate is, it is 6.5 degrees centigrade per 1000 meters. Okay. Now third factor is distance from the sea. Another that influencing factor is the distance from the sea. The places near the sea, they have a moderate climate, whereas the places located in the interior part of the continent, they have hot. In summers they are very hot, in winters they are very cold. It's the climate there is not moderate. This is because of the influence of the presence of sea or water bodies nearby, because the land heats and cools fastly, whereas water takes longer to cool and longer to warm up. So winds blowing from water to land, they will be cooler during the daytime and hot during the night time. So the climate will be moderate. Next is air mass and ocean currents, just like the land and sea breezes. Now the effect of air masses and ocean currents is also very prominent. Now the places which come under the influence of warm air masses, they experience higher temperatures, and the places that come under the influence of cold air masses, they experience low temperature. In the same way, those places located on the coast where the warm ocean currents flow, they record higher temperature than the places located on the coast where cold currents flow. तो समझ में आए ना, जहाँ हाई वार्म करंट्स होंगे तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ पे जो प्लेसेस हैं वो वार्म होगी, और जहाँ कोल्ड करंट्स फ्लो करते हैं तो वो प्लेसेस वहाँ पे कूल होगी, क्योंकि जो विंड्स उधर से फ्लो करेगी दे विल बी हॉट और cold.
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. नाउ पूरे ग्लोब पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दीज मैप्स A, B and C. There are some horizontal lines drawn on those maps. These lines are called isotherms. What is isotherm? Isotherms are lines that are joining all the places having equal temperature. जहाँ जहाँ equal temperature है उन places को वो join करती हैं isotherm lines. Okay, so this world map, it is clearly visible कि what is the temperature at different places in the month of July and in the month of January. Now there is a term used over here, equator and thermal equator. What do we mean by this? Equator is the actual line that is dividing the whole world into two. But thermal equator means the point where the temperature is highest. Thermal equator, where the temperature is according to the equator. तो थर्मल इक्वेटर समझ में आया, जहाँ टेम्परेचर सबसे लोएस्ट है, जहाँ हीट सबसे लोएस्ट है, तो दैट इज वाई वी कॉल इट थर्मल इक्वेटर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि द लाइन्स ऑफ आइसोथर्म्स, दे आर पैरेलल टू द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, but there are deviations in some places. This deviation is more pronounced in the month of January than in the month of July. The reason for this is कि here you can see the map. Here I am showing it to you. In the month of January, this is for the month of January. You just see the isotherms going like this and like this. Whereas in the southern hemisphere, they are parallel to the equator. But in the northern hemisphere, they are just deviating from their normal path. The reason behind this is, in the northern hemisphere, the land surface area is much larger than in the southern hemisphere, and hence the effect of land masses and ocean currents are well pronounced. So in January, isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent areas. South में continents की तरफ deviate कर रहा है ये. The presence of warm ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the northern Atlantic Ocean warmer, and the isotherms tend to move towards north. Over the land, the temperature decreases sharply and isotherms bend towards south in Europe. तो अब आप देख रहे हो ना, ये बहुत आइसोथर्म्स वहाँ डेविएट करेंगे जहाँ पे कॉन्टिनेंटल मासेस है, क्योंकि वहाँ पे हीट का डिफरेंस है, वहाँ हाई एरियाज भी बहुत है, हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज भी बहुत है. तो दिस इज द रीजन दैट डिफरेंस इज सीन ओवर हियर. ओके, देयर आर टू मैप्स हियर. दिस इज अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई. हियर यू कैन सी आइसोथर्म्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, and this is the map for the range of temperature between January and July, the difference between the months of January and July. So both these maps, they are giving us the isotherms where the temperatures are equal. Now next, let us come to the next topic, inversion of temperature. Now normally temperature decreases with increase in elevation. जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हाइट पे चढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स्ड. कभी कभी ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और नॉर्मल लैप्स रेट रिवर्ट कर जाती, चेंज हो जाती है. इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. द सिचुएशन इज रिवर्स्ड and the normal lapse rate is inverted. It is called inversion of temperature. Okay, तो जब ऐसा कभी होता है कि नीचे के एरियाज में गर्म हो, वार्म एयर हो, और हायर में कूल एयर हो, तो ये तो एक नॉर्मल है कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. पर कभी कभी क्या होता है कि हाई एरियाज में हॉट होता है और नीचे लोअर एरियाज में कूल एयर आके उसकी जगह ले लेती है. दिस इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन सिंपल.
birds. Okay. Now this inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up and beings to warm the earth and again it starts warming. तो ये जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है. जैसे ही सन आता है तो वो वापस टेम्परेचर्स नॉर्मल हो जाते हैं. A long winter night with clear skies and still air is an ideal situation for inversion. The heat of the day is radiated off during the night. रात में वो दिन की जो गर्मी है वो ऊपर जाने लगती है. And by early morning hours the earth is cooler than the air above. Over polar areas temperature inversion is normal throughout the year. अब एक चीज यहाँ जो और बताइए, द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज. कोल्ड एयर एट हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो कोल्ड एयर है माउंटेन्स पे और हिल्स पे वो नीचे की तरफ आती है. बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट्स almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valleys bottom with warm air above. This is called air drainage. It protects plants from frost damage. Frost damage बहुत ज़्यादा ठंड से plants मर जाते हैं तो इस air drainage से plants भी protected होते हैं. तो inversion of temperature समझ में आया. Now this finishes our chapter. Thank you children.